हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पुनीत फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। क्लास है 9th, लेसन नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन है What steps can be taken to overcome the barriers to communication? Answer. The following steps can be taken to overcome the barriers to communication. First, clear ideas. The person sending the communication should be very clear in his mind about what he wants to say. Number 2, simple language, tone and content. It is better to use simple language. Tone of the message should be soft. Contents of the message should be brief. Third, communicate according to the need of the receiver. The sender of the communication should prepare the message keeping in mind the educational level, understanding or environment of the receiver. Fourth, speak slowly. While communicating orally, the communication should be done at a suitable speed so that the receiver may not miss the important points. Fifth, asking questions. By asking questions, the speaker can ensure whether his message has been properly understood by the receiver or not. Sixth, use of pictures. When you are having trouble in explaining a difficult concept or you are speaking to a group of people with different native languages, use of pictures and diagrams can be the solution. ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा समझाती हूँ। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कई बैरियर्स यानी रुकावटें आती हैं, जिनको दूर करने के लिए हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। फर्स्ट, मैसेज भेजने वाले के मन में ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि वे क्या कहना चाहता है। सेकंड है, हमें कोई भी बात ब्रीफली और सिंपल लैंग्वेज में करनी चाहिए। मैसेज की टोन भी सॉफ्ट होनी चाहिए। थर्ड, अगर हम कोई मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रिसीवर का अंडरस्टैंडिंग लेवल या इन्वायरमेंट कैसा है। फोर्थ, अगर हम बोलकर कोई बात कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारी बोलने की स्पीड सूटेबल होनी चाहिए ताकि सुनने वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिस ना करे। फिफ्थ, स्पीकर रिसीवर से क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या रिसीवर को उसका मैसेज क्लियर हो रहा है या नहीं। सिक्स्थ, कई बार हमें किसी डिफ़िकल्ट कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने में मुश्किल आती है या कई बार हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को समझने वाले लोगों से बात करते हैं, तो उस समय पिक्चर्स एंड डायग्राम्स हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। ठीक है, अभी आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।